हेलो फ्रेंड्स लर्निंग केप चैनल आपण मानकु स्वागत। आज आम ओआर सोल्डरिंग जॉइंट ऊपर आउ किछि एमसीक्यू डिस्कशन करबा। चलंतु एबे क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन हला द आइडियल शेप ऑफ ए गुड शोल्डर जॉइंट। ओडे गुड सोल्डरिंग जो जॉइंट हेते तार आइडियल शेप कोन थिबो? ऑप्शन दर देला बल्की एंड अनइवन थिबो ना शार्प एज थिबो ना स्मूथ एंड कनकेव थिबो ना फ्लैट एंड डल थिबो। तल त राइट आंसर एटी जो प्ले माने तो आइडियल केस रे स्मूथ आउ कनकेव थिबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा। एक्सेस फ्लक्स लेफ्ट ऑन द जॉइंट में कॉजेस कोन कुछ एक्सेस फ्लक्स जे तोळे हमर लेफ्ट जॉइंट रे तले रहे तले कोन तार मेन कॉज कोन? बेटर कंडक्टिविटी ना कोरोजन ऑफ वेयर ना इंप्रूव इंसुलेशन ना रिड्यूस रेजिस्टेंस। तले त राइट आंसर एटी पेले माने कोन हो? ऑप्शन बी कोरोजन ऑफ एयर। जेतले एक्सेस जेतले हमर फ्लक्स हमर जॉइंट रे रहे सेतरे हमर को जंक लागि। The next, which of the following metals has the lowest melting? निम्नलिखित मध्यरु केउ मेटल रो सबठारु लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? कॉपर, टिन ना लीड ना सोल्डर? ताले हमर मेल्टिंग पॉइंट से कुछ लोएस्ट का रहिबो। कॉपर हमर मेल्टिंग पॉइंट केते 1085 डिग्री सेंटीग्रेड तो से मेल्ट हो। टिन नो 231 डिग्री सेंटीग्रेड, लीड रो 327.5, शोल्डर रो केते हिजबो 183। तन करता राइट आंसर हमर कोन हिजबो? सोडा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कार ना शोल्डर रो जोटा 183। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा। The insulation on the wire should be removed. Insulation on the wire should be removed. क्या पूरे हम रिमूव करें? आफ्टर सोल्डरिंग पर इंसुलेशन रिमूव करिया ना बिफोर सोल्डरिंग पूर्व ना ड्यूरिंग सोल्डरिंग ना नेवर रिमूव? तो द राइट आंसर एटी कोन हो पिला माने? सबले मन रखिबे हमर इंसुलेशन रिमूव केतला करा जाय जेतो सोल्डरिंग हबा पूर्व। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। A cold shoulder joint occurs when cold shoulder joint केतले होय जेतो सोल्डरिंग इज डन फुपा जेतो सोल्डरिंग बहुत जल्दी हम कर देबा किबा द जॉइंट इज ओवरहीटेड जॉइंट ओवरहीट अधिक हीट हे जिवो किबा द शोल्डर डिड नॉट मेल्ट कंप्लीटली जेतले एटा भी ते पर एक्सेस फ्लक्स जेतले यूज होय तल राइट आंसर एटी कोन होबा हमर? ऑप्शन नंबर सी हे जिवो जो हे जिवो द शोल्डर डिड नॉट मेल्ट कंप्लीटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लक्स शुड बी अप्लाइड। फ्लक्स शुड बी अप्लाइड आफ्टर सोल्डरिंग पर हम यूज करिवा ना बिफोर हीटिंग पूर्व ना आफ्टर अप्लाइंग शोल्डर ना ड्यूरिंग कूलिंग? तल त राइट आंसर एटी पिला माने कोन होबा? बिफोर हीटिंग पूर्व हम सब मन के फ्लक्स अप्लाइड करिया। The next question, which type of soldering joint gives the strongest mechanical bond? कुछ क्यों टाइप रा हमरो सोल्डरिंग जॉइंट बेसिकली हम स्ट्रांगेस्ट मैकेनिकल ट्विस्ट जॉइंट ना टी जॉइंट ना लैप जॉइंट ना वेस्टर्न यूनियन जॉइंट? द राइट आंसर कोन होबो? सोल मन कि वे केस रे हमरो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट केस रे हम सब अधिक मेकानिकल बॉन्ड सेतरे जोटा कि हम स्ट्रांगेस्ट मेकानिकल बॉन्ड दिए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द डिवाइस यूज्ड टू होल्ड वायर्स इन पोजीशन ड्यूरिंग सोल्डरिंग इज कॉल्ड। जो डिवाइस हमर यूज करा जाय सोल्डरिंग आयरन को धरिया पे सोल्डर जो पोजीशन ने ताको को डिवाइस यूज करा जाय? वायर को जो हमरो होल्ड करे बेंच वाइज हैंड वाइज हेल्पिंग हैंड और थर्ड हैंड स्टैंड क्लैंप मीटर? तल त राइट आंसर कोन हो? इजी क्वेश्चन प्ले माने एटा हिटिंग हैंड किबा थर्ड हैंड स्टैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा।
which of the following joints is used for connecting a tap wire to a main wire? निम्न क्यों जॉइंट हम यूज करा जाए कनेक्ट टैप वायर टू मेन वायर? वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, टी जॉइंट, मेरिट जॉइंट, लैप जॉइंट। तो राइट आंसर एटी कोन हो हमरो टी जॉइंट यूज करा जाए बेसिकली देखो कनेक्टिंग करे में टैप वायर को टू मेन वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा when soldering electronic component which type of solder is preferred? सिको जेतोले हमरो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जेतोले सोल्डरिंग करा जाए क्यों प्रकार सोल्डरिंग 70/30 लीड 10% थिबो ना 60/40 10 लीड थिबो ना 40/60 10 लीड परसेंटेज ना प्योर 10 थिबो? तो राइट आंसर डिप्ले माने कोन हो ऑप्शन बी जोटा 60 और 40% रो 10 लीड रो यूज होतो। The next question, the correct color of properly heated soldering iron tip। से कुछ soldering iron ने जो tip टा थिबो जो tip रो तारो properly जो heated थिबो तार color कौन थिबो? shiny silver रहबो ना dull black रहबो ना red hot रहबो yellowish रहबो? the right answer एटी कोन हबो सब मन रखिबे जेतले एटी हमर shiny silver color रहबो soldering iron ने जो tip टा। The next question को जीवा the main reason for poor adhesion of solder to wire is using rosin flux, oxidized wire surface, proper heating, clean wire। so main कारण कौन जोटा poor adhesion पे कोथिना solder to wire रे? the right answer कौन हबो एटी proper heating ना proper heating हबो नहीं ऑक्सीडाइज वायर सरफेस हो जोटा कि तार मेन कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ शोल्डर जॉइंट इज कुछ मेन डिसएडवांटेज शोल्डर जॉइंट रो कोन हाई रेजिस्टेंस एतरे थिबो ना लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ना पुअर अपीयरेंस ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो राइट आंसर पिला माने कोन हो लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। Then next question को हमें जीवा the best solder composition of an electrical work। कुछ हम गोटे इलेक्ट्रिकल वर्क जेतले हम सोल्डरिंग करिया त बेस्ट कंपोजिशन कोन 50% लीड रहइबो 50% टिन किबा 90% टिन 10% लीड किबा 70% लीड 30% टिन 60% टिन 40% लीड। तो राइट आंसर एटी कोन हो पिला माने सब मन रखिए बेस्ट केस रे शोल्डर कंपोजिशन ने कोन थिबो 60 और 40 टिन और लीड। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन मुझे एसिड फ्लक्स जनरली यूज हमर एसिड फ्लक्स जनरली कोथि रहै छै मैकेनिकल सोल्डरिंग एग्जांपल देला शीट मेटल वर्क जो दी छै किंबा इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सोल्डरिंग ना एल्युमिनियम सोल्डरिंग। सो मानो कि एसिड फ्लक्स जनरली हमर कोथि यूज में मैकेनिकल सोल्डरिंग रे। तो राइट आंसर इट इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइनिंग ऑफ वायर मींस टाइनिंग ऑफ वायर्स मीन माने कवरिंग द वायर विथ इन्सुलेशन कुछ हमरो वायर टा इन्सुलेशन ने कवर हेतिबो किंबा कोटिंग द वायर विथ ए थिन लेयर ऑफ सोल्डर पतला लेयर ओट कोटिंग हेतिबो क्लीनिंग द वायर विथ एसिड ना कनेक्टिंग टू वायर्स। तो राइट आंसर इट पिला माने कोन हो टाइनिंग माने कोटिंग द वायर विथ ए थिन लेयर ऑफ सोल्डर। Then next question को हमें जीवा the quality of soldering joint can be tested by कुछ गुटे हमर सोल्डरिंग जॉइंट रो क्वालिटी हम केमती टेस्ट करिया फुल टेस्ट बा विजुअल इंस्पेक्शन ना बर्निंग द जॉइंट ना हैमरिंग द जॉइंट ना मेजरिंग द इंसुलेशन। એટલે મને এটা মতে কমেন্ট করি কইবে আর आंसर কোন হবো এটা প্রায় আমি ডিসকাশন মতে করি দেইছেন যেটা রিপিট হলা বলে লাগুଛି क्वेश्चनটা। नेक्स्ट क्लास रे हमें किसी प्रीवियस ईयर रो एमसीक्यू स्टार्ट करिबा
जोटा कि विगत गोटे क्वेश्चन पेपर आम डिस्कसन करबा को भाया टाइप रो क्वेश्चन आसुला और आगामी दिन केमती क्वेश्चन पड़िबो भलसे पढ़ंतु प्रिपेयर करंतु भलसे टाइम टेबल बनाई। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।